Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So if you are new here, I have already uploaded 19 parts of this PYQ series. So make sure to check them out. You'll find all the links in the description below. Today we are on to part 20 where I'll be discussing more important PYQs with you all. So this series is going to boost your preparations for your exam. So stay tuned till the end because these questions are super helpful for you. Also, I have already covered 20 questions of this PYQ series and uploaded a PDF on my Telegram channel. If you haven't downloaded it yet, go grab it now. And once we reach 400 questions, I'll upload another PDF with the remaining ones. Alright, so let's begin with today's first question, which is match the following question, question number 277. आपको कुछ सोशियोलॉजिस्ट दिए हैं और उनके फील्ड ऑफ उनके एरिया ऑफ स्टडी दिया हुआ है. वी हैव टू मैच देम करेक्टली. सोशियोलॉजिस्ट्स हैं रॉय कॉनल, जेनिफर गैबरिस, एश आमंड, जेवियर ओरो. द करेक्ट आंसर इज, देखो, रॉय कॉनल की वी ऑलरेडी नो, उन्होंने हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी की थ्योरी दी थी. जेनिफर गैबरिस की डिजिटल इकोलॉजीज, लाइक हाउ टेक्नोलॉजीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, राइट. एश आमीन की अर्बन मल्टीकल्चरलिज्म की थ्योरी दी थी कि हाउ डाइवर्स कल्चर्स इंटरैक्ट इन सिटीज़ हैव डिफरेंट कल्चर्स लिविंग टुगेदर और वो एक दूसरे की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं. और जेवियर ओरो का है पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म. Alright, so the correct answer is option 1. Question number 278. The concept of algorithmic governance, which explains how digital technologies control society, was developed by which thinker? Algorithmic governance. New question है आपके लिए. Louis Amour, Antoinette Rouvroy, Wendy Brown, Evgeny Morozov. Algorithmic governance. Who has given this concept? So this concept was given by two thinkers, Louis Amour and Antoinette Rouvroy. So they both wrote about algorithmic governance by explaining how AI and data control people's life. Alright, next question, question number 279. Which of the following theorists introduced the concept of slow violence, referring to governmental damage that happens gradually over time? A. Rob Nixon, B. Bruno Latour, C. Richard Sennett, D. Donna Haraway. Slow violence. So only Rob Nixon introduced this concept of slow violence, which means that governmental damage happens slowly, so people don't pay attention to it. Question number 280. We have to arrange these following concepts in chronological order. So social capital, option A by Pierre Bourdieu, assemblage theory, Gilles Deleuze, C. actor network theory, Bruno Latour, or option D, environmental racism, Robert Bullard. You have to match them in chronological order. The correct answer is ऑप्शन 4. पहले आता है हमारा एक्टर नेटवर्क थ्योरी, देन एनवायरमेंटल रेसिज्म, उसके बाद आएगा सोशल कैपिटल, एंड देन सबसे लास्ट में असेंबलेज थ्योरी आती है, राइट. सो assemblage theory से Deleuze he explained that society is always changing and is made up of different
डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस लाइक जो हमारा जो सोसाइटी का हिस्ट्री है या पॉलिटिक्स है, कल्चर है, एक्सेट्रा. Question number 281. Which of the following sociologists is known for their work on financialization of everyday life, exploring how economic structures shape personal decisions? Option A, Randy Martin. Option B, Greta Krippner. Option C, Wolfgang Streeck. Option D, Colin Crouch. Financialization of everyday life. So these all are new questions for you. आज मैं काफ़ी सारे न्यू क्वेश्चंस लाई हूँ आप लोगों के लिए. वही हम पुराने क्वेश्चंस बार बार करते जा रहे थे. द करेक्ट आंसर इज रैंडी मार्टिन, ग्रेटा क्रिपनर and Colin Crouch. So they just introduced this concept of financialization of everyday life, which means that financial systems like जो हमारे बैंक लोन्स होते हैं या जो स्टॉक मार्केट होती है, डेट, they now affect even our daily life as well, including जो हमारी एजुकेशन है, हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, वो सब भी. उसको इन्होंने बोला था फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ. नाउ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अगेन. कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके डेफिनेशन दिए हुए हैं. राइट टू द सिटी, एवरीडे अर्बैनिज्म, देन splintering urbanism and planetary urbanism. Definitions हैं option 1, claiming urban space for marginalized groups. 2, focus on informal spontaneous city life. 3, unequal infrastructure development. 4, urbanization beyond city boundaries. So very easy question. ये सारे ही correctly matched हैं. Right to the city. इसका वन है ना, क्लेमिंग अर्बन स्पेसेस फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. सो ऑल पीपल, नॉट जस्ट द रिच वंस, जबकि सारे ही लोग, दे शुड हैव अ से इन हाउ सिटीज़ आर बिल्ट एंड डेवलप. जबकि क्या होता है, सिर्फ जो रिच क्लास है वो ही ये डिसाइड करता है कि कैसे सिटीज़ को डेवलप करना चाहिए. एवरीडे अर्बैनिज्म, जो हमारा स्मॉल डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो शेप करती हैं सिटीज़ को. Splintering urbanism, cities are becoming more divided between rich and poor areas. So this is happening partly due to what? Technology and globalization. ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह की तो बढ़ने से ही हो रहे हैं. हमारे सिटीज़ और जो भी टाउन्स हैं इन सब में एक डिवाइड आ रहा है, रिच और पुअर एरियाज़ में. प्लानिटरी अर्बनाइजेशन इज़ व्हाट? Urbanization beyond city boundaries. So urbanization is happening everywhere, not just in cities but even in rural areas as well. So it is affecting the entire planet. Question number 283. Which sociologist introduced the term worlding, describing how urban spaces in the global south shape global urbanism? अनन्या रॉय, अब्दू मलिक सिमोन, एडगर पीटर्स, ऐश आमिन. आपके कोड्स इधर दिए हुए हैं. यू हैव टू आंसर फ्रॉम दीज कोड्स. वर्ल्डिंग का टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? अगेन न्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 283. दो थिंकर्स थे, Ananya Roy and Abdul Malik Simon. So they have introduced this term worlding, which explains how cities in poorer countries influence global urban development. All right, next question is very easy. आपको बताना है इमोशनल लेबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किसने पहली बार डेवलप किया था. Very easy concept given by Ali Hochschild. Option A only. ये सिर्फ Ali Hochschild का था.
where she explained कि how workers manage their feelings in job, like flight attendants जो होते हैं, जो air hostess होते हैं, they keep smiling all the time, या receptionists को ले लो. Question number 285. Which of the following sociologists have contributed to the study of digital labor? Option A, Tiziana Terranova. Option B, Ursula Hughes. C, Arjun Appadurai. D, Richard Sennett. डिजिटल लेबर का कॉन्सेप्ट जो है आप एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हो. सो वी ऑलरेडी नो कि इन दोनों का ये कॉन्सेप्ट नहीं था. अर्जुन अपादुराय और सेनेट का ये कॉन्सेप्ट नहीं था. सो Tiziana Trinova and Hughes, they have studied how people work on the internet, often without getting paid or getting very low wages. So this is called digital labor. इन दोनों का कॉन्सेप्ट था टेरेनोवा एंड ह्यूज का. Therefore option A is correct. Option 1. Question number 286. Again, match the following question. कुछ सोशोलॉजिस्ट्स दिए हैं, आपको करेक्टली मैच करना है उनके कॉन्सेप्ट से. इंगन आइसन, आइवा ओंग, सास्किया सासन, निकोलस रोज. उनके कॉन्सेप्ट्स हैं एक्ट्स ऑफ सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबल सिटीजनशिप, ग्लोबल सिटीज़, बायोपॉलिटिक्स एंड सेल्फ गवर्नेंस. आइवा ओंग को तो हमने पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा है. The correct answer is option 1. They are already matched. So Ingen Eisen जो है, he explained how people become active in society and take part in politics. So उनका act of citizenship था. Iva Ong studies how people's identity change when they move to a new country. Flexible citizenship. Saskia Sassen we already know कि she studied big cities and how they affect the world economy, therefore global cities. And Nicholas Rose studied how governments control people's behavior and daily life. So biopolitics and self-governance. Question number 287. Which of the following are associated with the study of financial capitalism in contemporary sociology? Option A, Greta Krippner. Option B, Maurizio Lazzarato. Option C, Rowan Connell. Option D, Michelle Callan. द करेक्ट आंसर इज, हम एलिमिनेट कर सकते थे. ये थ्योरी रॉय कॉनेल ने कभी यूज़ नहीं करी थी, कभी उन्होंने स्टडी नहीं किया था फाइनेंशियल कैपिटलिज्म को. रादर जो ग्रेटा क्रिपनर हैं, लाजराटो हैं, कैलन हैं, दे हैव स्टडीड. सो क्रिपनर एंड लाजराटो स्टडी हाउ बैंक्स एंड मनी और debts affect people's life, and Callan studies how markets and business work by using ideas from sociology and economics. Therefore option A, B and D. Option 3. Chronology question again. Option A, the death and life of the great American cities, Jane Jacobs. Option B, the Right to the City, Henry Lefebvre. C, Planet of Slums, Mike Davis. D, Assemblage Urbanism, Colin McFarlane. You have to match them correctly. Let's write the publications first. So Jane Jacob की जो थी, ये आई थी 1961 में. हेनरी लेफेब्रे ने दिया था द राइट टू द सिटी 1968 में. देन माइक डेविस की आती है 2006 में. एंड असेंबलेज अर्बानिज्म आती है वेरी रिसेंट 2011. सो लेट्स मैच देम करेक्टली. पहले आएगा हमारा ए, ऑप्शन ए. ओके,
So I think the codes are wrong. सबसे पहले आना चाहिए ऑप्शन ए, chronologically arrange the following work in order, 1 A B C and D. Okay, so options गलत है, A B C D, so these are correct. All right, next question, question number 289. According to sociologist Nancy Fraser, ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, recognition and redistribution debates focus on the balance between cultural identity and economic justice. Option B, the impact of globalization on nation states. Option 3, the relationship between surveillance and power. 4, the decline of social movements in neoliberal societies. Recognition and redistribution debate किस पे फोकस करता है? नैन्सी फ्रेजर की ये डिबेट थी. The correct answer is option 1, the balance between cultural identities and economic justice. So Fraser says a fair society should respect different cultures and also make sure that wealth is shared fairly. Both cultural identity and money are important for justice. Question number 290. Which of the following sociologists introduced the concept of global assemblage to understand globalization? Option A, option 1, Arjun Appadurai, 2, Ivor Ong and Stephen Collier, 3, Saskia Sasson, 4, Manuel Cassel. Global assemblage की theory किसकी थी? Who introduced this concept? So Ivor Ong and Stephen Collier, they both introduced the idea of global assemblages. So this means that globalization affects politics, economy and culture in many connected ways. आज का last question, question number 291. Which of the following thinkers are associated with the sociology of technology and innovation? A, Langdon Wiener. B, Andrew Finberg. C, John Ury. D, Donna Haraway. आपको कोड्स दिए हुए हैं, आपको उससे आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 291. द करेक्ट आंसर इज, देखो जो लैंगडन वीनर थे और एंड्रयू फिनबर्ग थे, they have studied how technology changes society. They believe that new inventions shape how people live and work. And Donna Haraway studies how science and technology affect women and gender roles. Therefore, the correct answer is A, B and D, option 3. All right. So before we end, a quick reminder about the PDF I've created for sociology students preparing for competitive exams. So it's a structured and easy way to revise important topics and practice questions. The original price of this PDF is rupees 199, but for a limited time you can get it for just rupees 99 or 100. So that's 50% off. If you want this PDF, just text me on my Telegram channel. I have also uploaded a detailed video explaining what's inside the PDF and how it will help you. So the link is in the description. Don't forget to check it out. Alright. So that's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching, guys. I'll see you in the next video. Thank you.